14 से लेकर 15 फरवरी के दौरान जूनागढ़ के भवनाथ में महाशिवरात्रि के मेले का आयोजन हो रहा है, जिसकी आज से शुरुआत हुई है। तब हजारों की तादाद में भक्त महाशिवरात्रि के भवनाथ के मेले के दौरान पहुंचने की शुरुआत कर चुके हैं। वहां पर भक्तों के लिए कई तरीके की सुविधाएं खड़ी करवाई गई है। तब आपको बता दें कि भवनाथ महादेव में ध्वजारोहण के साथ महाशिवरात्रि के मेले का प्रारंभ करवाया गया है। तब वहां पर हर हर महादेव और बम बम भोलेनाथ के नाद सुनाई पड़ रहे हैं। भवनाथ मंदिर पर ध्वजारोहण करवाया गया है। तब इस दौरान साधु संत और साथ ही प्रशासन के पदाधिकारी बड़ी तादाद में मौजूद रहे थे। इसके अलावा भवनाथ तलेटी में पुराने अखाड़े, आह्वान अखाड़े और अग्नि अखाड़े में भी ध्वजारोहण किया गया है। तब वहां पर भी बड़ी तादाद में साधु संतों और पदाधिकारियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। इस वक्त बड़ी तादाद में भक्तजन जो है वो महाशिवरात्रि के मेले के लिए पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि मेला में आज शुभारंभ थवा जई रहવાનો છે ત્યારે જૂનાગઢ ભવનાથ ખાતે સાધુ સંતો અને ભાવિકોનું આગમન ભવનાથ તરફ આજથી પ્રારંભ થવાનો છે। તેવા સમયે ભવનાથ ક્ષેત્રમાં આજથી હર હર મહાદેવ, અલખ નિરંજન જેવા નાદ સાથે ભજન, ભોજન અને ભક્તિનો મહાસાગર છલકાવાનો છે। ત્યારે ભવનાથમાં આવતા લાખો શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી જિલ્લા પોલીસ વાળા દ્વારા તમામ તૈયારીઓ અપાઈ ગયો છે। હજારોની સંખ્યામાં પોલીસ કર્મીઓ લોકોની જે આવનાર લોકોની સુરક્ષા માટે કામ કરશે। આમ અનેક ક્ષેત્રે ભાવિકો આવવાના હોય ત્યારે તેના ભોજન અને અન્ય વ્યવસ્થાઓની પણ કાળજી લેવાઈ રહી છે। અનેક ક્ષેત્રો આજથી ખુલી રહ્યા છે। આમ ભવનાથમાં હર હર મહાદેવના નાદ સાથે આજથી મહાશિવરાત્રિ મેળામાં ભાવિકોનો પ્રવાહ ઉમટતો જોવા મળશે। રિપોર્ટર પ્રકાશ દવે।